Hello kids, we are back with another beautiful story and the title of the story today is Greatest Masterpiece. Masterpiece जानते हैं ना, कोई भी ऐसी एक चीज जो सबसे बढ़िया सबसे अलग हो, that is called a masterpiece. So let's begin the story. Once there was a man who had 3 sons and no other possessions beyond the house in which he lived. Now the father loved his 3 sons equally, so he could not make up his mind who should have the house after his death, because he did not wish to favor any one more than the others. And he did not want to sell the house because it had belonged to his family for generations. Otherwise, he could have divided the money equally amongst them. At last an idea struck him, and he said to his sons, "You must all go into the world and look about you and each learn a trade. And then, when you return, whoever can produce the best masterpiece shall have the house." अब तीनों बेटे उसको इक्वली प्यारे थे, किसी एक को घर दे नहीं सकता था और पुरखों से ये घर उसके पास था तो बेच करके वो पैसे भी बच्चों में नहीं बांटना चाहता था। अब क्योंकि वाइज था तो एक आइडिया आया कि तीनों अलग अलग जाओ, कुछ भी सीखो और जब आप वापस आओगे जो सबसे ब्यूटीफुल और बेस्ट मास्टरपीस बनाएगा ये घर में उसको दूंगा। थोड़ी अजीब शर्त है मगर देखते हैं सही थी या गलत। The sons were quite satisfied. The eldest wished to be a blacksmith, the second a barber, and the third a fencing master. They appointed a time when they were to return home and then they all set out. अब हमें 3 नई चीजें पता चली हैं. Let us see. Blacksmith, जो लोग आयरन से, लोहे से काम करते हैं ना, जिसे हम हिंदी में लोहार कहते हैं, that is blacksmith. बार्बर तो हमें पता ही है, नाई जो बाल काटता है और दाढ़ी बनाता है. एंड द थर्ड इज फेंसिंग मास्टर. फेंसिंग मास्टर जानते हैं क्या होता है? जो तलवारबाजी बहुत अच्छी करता है, स्वॉर्ड्समैनशिप जिसकी बहुत अच्छी होती है. अब उन तीनों ने एक टाइम डिसाइड करा कि इस टाइम पे हम वापस आएंगे. चलिए देखें आगे क्या हुआ. इट सो हैपेंड that each found a good master where he learnt all that was necessary for his trade in the best possible way. The blacksmith had to shoe the king's horses and thought to himself, "Without doubt, the house will be yours." Shoe the king's horses मतलब घोड़ों के जो पैर के नीचे नाल लगाई जाती है ना लोहे की, that is called to shoe the king's horses. The barber shaved the highest in the kingdom and he too made sure that the house would be his. अब उसने भी ट्राई करा कि वो अपनी ट्रेड में सबसे ज़्यादा अच्छा हो. The fencing master received many a blow, but he set to his teeth and would not allow himself to be troubled by them. For he thought to himself, "If you are afraid of a blow, you will never get the house." तो अब जो तीसरा भाई तलवारबाजी सीख रहा था उसको बहुत चोटें आईं, लेकिन वो फिर भी लगा रहा कि अगर चोटों से डर गया तो हाउस कैसे मिलेगा. When the appointed time had come, the 3 brothers returned home. They sat down in the company of their father and discussed the best opportunity of showing off their skills. Just then a hare came running across the field towards them. "Look," said the barber, "here comes something in the nick of time." He seized basin and soap, made a lather whilst the hare was approaching, and then, as it ran full tilt, shaved its moustaches without cutting or injuring a single hair on its body. जब वो बैठ के बातें कर रहे थे तभी वहां से एक हेयर यानी कि खरगोश भागता हुआ आया. उसको देखते ही जो बार्बर था, नाई था, उसने कहा ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबको दिखाने की कि मैं कितना स्किल्ड हूँ.
तो जब वो दूर से आ रहा था, उसने एक बर्तन लेकर के उसमें पानी में सोप मिलाया, उसका लादर यानी कि झाग बनाई। लादर, सोप से पानी में को रगड़ के जब झाग बनती है उसको लादर कहा जाता है। और जैसे ही वो हेयर थोड़ा नज़दीक आया, उसके भागते भागते ही उसने उस खरगोश की, उस हेयर की मूछें काट दी। और ऐसा करते हुए उस जानवर को ज़रा सी एक खरोंच भी नहीं आई। तो वो इतना स्किल्ड था। I like that very much indeed, said the father. Unless the others exert themselves to the utmost, the house will be yours. Soon after, they saw a man driving a carriage furiously towards them. Now, father, you shall see what I can do, said the blacksmith. And he sprang after the carriage, tore off the 4 shoes of the horse as it was going at the top of its speed, and shod it with 4 new without checking its pace. अब देखिए कितना स्किल्ड है। घोड़ा गाड़ी जा रही है, भागते घोड़े, रिपीट, अब देखिए कितना स्किल्ड है ये। जाती हुई, भागती हुई घोड़ा गाड़ी में बिना उनकी स्पीड को रोके या घोड़े को रोके उसने घोड़े के चारों पैरों की नाल निकाल के नई नाल लगा दी। कितना स्किल्ड था। You are a clever fellow, said the father, and know your trade as well as your brother. I really don't know to which of you shall I give the house. Dilemma father के लिए अब इसको दे कि उसको दे। Then the third son said, Father, let me also show you something. So it was beginning to rain. He drew his sword and swung it in cross above his head, so that not a drop fell on him. And the rain fell heavier and heavier till at last it was coming down like a water sprout. But he swung his sword faster and faster and kept as dry as if he were under cover. ये स्किल तो कितनी अमेजिंग है। तेज बारिश हो रही है, अपनी स्वॉर्ड ही सिर्फ ऊपर ऐसे चलाई कि उसके ऊपर एक ड्रॉप भी पानी की नहीं गिरी। When the father saw this, he was astonished and said, You have produced the greatest masterpiece. The house is yours. Both the other brothers were quite satisfied and praised him too. And as they were so fond of each other, they all 3 remained at home and plied their trades. And as they were so experienced and skillful, they earned a great deal of money and lived happily together till the end of their lives. What a beautiful story! और कितना कुछ हमें सीखने को मिला। पहली बात ये, किसी भी ट्रेड में, किसी भी काम में जाओ, अपनी स्किल्स बढ़ाओ, इतने मन लगाकर अच्छे से सीखो। और दूसरी बात क्या, कि हमारे आसपास लोगों की कितनी भी ज़्यादा स्किल हो, हमें कभी भी जेलस फील नहीं करना चाहिए है। अगर बिना जेलसी के एक दूसरे के साथ रहें तो हमारी स्ट्रेंथ, ताकत बढ़ती है, कम नहीं होती। होप यू एंजॉयड दिस स्टोरी।